गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om Shanti 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 Hari Om. Let there be peace, let there be peace and love amongst all the human beings of this universe. Let there be peace. Om Shanti Shanti Shanti. We are starting the revision of the chapter number 11, that is the story of Janaka. It's a very enchanting story as usual. All the stories in this Essence of a Yogavaasishtha, the booklet which has been carved by Swami Gyananandaji from the 32,000 shlokas of original Yogavaasishtha to 2,000 shlokas for our betterment. And really, these stories are changing the way we are thinking in the life, the way the proceedings of our lives are taking place, and the way internal mechanism of our mind is changing day by day for happiness, for blissfulness, for cheerfulness, for contentmentness, for tranquility, and over and above relax and cool attitude. जिंदगी में मस्ती ही आना चाहिए हर परिस्थिति में। तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, कितनी भी डिफिकल्टी है, अगर आपने जीवन में ड्यूअलिटी छोड़ दी है, ड्यूअलिटी और ड्यूअलिज्म छोड़ दिया है, और ट्रांसेंडेंट एमएनएन वन विदाउट सेकंड, सब में ही नारायण देखना चालू कर दिया। ऐसा पॉसिबल है सब में नारायण देखना? इंटरनली पॉसिबल है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं करना है। एक्सटर्नली जो चल रहा है उसको चलने देना है। इंटरनली we have to be very 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 cautious so that our mind always will remain in tranquility, in the blissful mode, and it will always remain one with the divinity. That is what is the purpose of doing this contemplation on essence of a yoga vasishta, and remaining happy always. Remaining happy always doesn't require you to go to Himalaya. Remaining happy always doesn't require you to go to Giri Kandara or some caves and meditate there. Remaining happy doesn't require you to do any dhyana or any japa. Remaining happy requires only one thing: mind your mind. अपने मन को अपने को तराशना है। अपने मन में की जो भावनाएं हैं, अपने मन में के जो विचार है, एक बार विचार निकाल दिए तो मन कॉन्शियसनेस है। इतना सिंपल है। इससे और हिंदी और सिंपल क्या हो सकती है? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अपने मन में के विचार निकाल दो तो क्या बचेगा? सिर्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ प्रभु बचेंगे। ये विचार निकालना ही नहीं जमता है, क्योंकि विचार ही आते रहते हैं। तो क्या करें? विचार प्रभु की तरफ मोड़ दो। और इसी के लिए ये अपना आफ्टरनून मीटिंग, या कोई लोग इसको सत्संग कहते हैं, कोई लोग इसको इसकी एसेंस ऑफ योगा की पढ़ाई करते हैं। जो कुछ नाम दो, नाम कुछ अनेक रहे, पर देखना अपने मन की तरफ है। We have to see towards our mind, and with this, now we are starting Janopakhyana. Now the question will come: how can a Vasishtha Rishi telling the story of a Janaka to Rama? This may be a technical question some people may have. Obviously, because you may feel that this yuga is different, or Janaka's daughter has been given to Rama to marry, and so that is a story, and so many things. Actually, time itself is a big concept, and time, if you have a circle, you don't know where it has started and where it ends, because the points on the circle are not known. If the circle is moving, so it's not there. And apart from that, all these stories are told only for one purpose: to know the truth. ये स्टोरीज इसीलिए बताई गई कि अपने को उसमें का ट्रूथ लेना है, ना कि उस स्टोरी के साथ चलना है. So with this small introduction, let us try to go into the chapter number 11. So what it has to say, Vasishtha Rishi has to say something to Rama, and through that he has to say something to us also. So what is that? Now be attentive, very attentive. Today's really great topic is starting. Everything is Paramatma. This is the truth which includes us also. सब कुछ परमात्मा है, अपन भी उसमें इंक्लूडेड है, अपन एक्सक्लूडेड नहीं है। यहाँ की ट्रीज परमात्मा है, यहाँ के एनिमल्स परमात्मा है, यहाँ के अच्छे लोग परमात्मा है, यहाँ के बुरे लोग परमात्मा है, यहाँ के
सब कुछ एसेंशियल चीजें परमात्मा है, इनर चीजें परमात्मा है। कैसे क्या हो सकता है? ये शास्त्र कहता है। तो उसके लिए बहुत सुंदर संस्कृत स्टेटमेंट है, समस्तम खलु इदम ब्रह्म। सभी कुछ परमात्मा है, यानी क्या? परमात्मा अलोन इज, infinite is alone, that is the Chidakash. It is a solid conscious space. Solid conscious space means there is nothing other than the divinity in that. उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बाहर जो व्यवहार चल रहा है इसका क्या? कोई खुश हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु हो रहा है, इसका क्या? ये रिलेटिव जगत में ऐसा होते रहता है। ये सिर्फ आभास है, क्योंकि अपन ने उसको बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे लिया है, देहात्म भाव रखा है, इसलिए अपने को जगत दिख रहा है। जगत दिख रहा है इसलिए सब जगत के लोग दिख रहे हैं। अपन वही अपनी सोच बदल दो कि ये डिविनिटी है। एक स्त्री की तरफ देखते हुए अपने क्या क्या भाव हो सकते हैं? ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी नानी है। ये ऐसी बहुत सारी मेरे अपने भाव हो सकते हैं। पर असल में वो स्त्री कौन है नेचर के साथ? वो नेचर को पूछा जाए तो बोलेंगे ये तो स्त्री है यार, बाकी बाकी मेरे को कुछ मत बता, बाकी मेरे को उपाधियों से कुछ लेन देन। ओनली अ फीमेल और अ मेल, यानी ग्रॉस लेवल पे फीमेल और मेल। और अगर सटलर लेवल पे जाके देखेंगे तो अपन वो माँ शारदा का या जो कोई डिविनिटी, दुर्गा का या सरस्वती का या लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो भगवान रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कोई भी स्त्री की तरफ देखते वक्त अपने को डिविनिटी की याद आना चाहिए। माँ, वो काली माँ की पूजा करते थे, काली माँ याद आना चाहिए अपने को हर वक्त। सो दैट इज व्हाट अगेन वी आर कमिंग टू अवर मेन टॉपिक, परमात्मा अलोन इज इन्फिनिट। अलोन इज इन्फिनिट में से कुछ भी अपन निकाल नहीं सकते और ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिट तो इन्फिनिट है। सो वी शुड नॉट बी पीटी ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अपन लोग बोलते हैं ऐसा कैसे ये आदमी है, ये कैसा हो रहा है, ऐसा। यू शुड नॉट बी pity फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज if there is a misery in this world, we should go there and help them, and we should not discuss about the misery. We don't have to discuss on that. हाय गड़बड़ हो गई, कुछ परेशानी है, यू कैन हेल्प देम, अदरवाइज कीप क्वाइट। कुछ नहीं, क्योंकि आपको तो पता है ना, आप तो भी पढ़ रहे हैं, आप सब लोग इसका कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। कॉन्टेम्पलेशन करते वक्त अपने को क्या देखना है कि अपना मन कैसा है, अपना मन वो डिविनिटी में है या नहीं है। एक बार मैं साउथ के एक टेम्पल में विजिट कर रहा था, तो टेम्पल के बाहर ऐसे रेशम धागे से छोटे छोटे पत्थर जोड़ के रखे थे। तो टेम्पल के प्रीस्ट को पूछा ये क्या है, तो बोले छोटे पत्थर ये अपने मन का सिंबल है, ये प्रतीक है। और तो वो छोटे वो रेशम के धागे से अपने वो पत्थर को यहाँ बांध देना है। इसका मतलब अभी अपन ने अपना मन जो है वो अभी ईश्वर को दे दिया। यू हैव गिवन योर माइंड टू दैट डिविनिटी, यू हैव गिवन दैट माइंड टू दैट लॉर्ड। So now your mind is not remaining. So let him decide what has to be done. So very nice message given through this small procedure which that temple was doing. Tie your mind to that holy temple and forget about it. So no more discussion because of your mind. It's already given to the God. So what is the spiritual practice? Keep your mind equanimous. We are not here to evaluate or judge anybody. अपन यहाँ पे जगत में किसी को इवेल्युएट या जज करने के लिए आए नहीं, अरे इसका परफॉर्मेंस खराब है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सलेंट है, इज नंबर वन, इसके लिए आए नहीं। सो व्हाट इज दैट? When you say samastam khaluidam brahma, therefore joy is Paramatma, misery is also equally Paramatma, gain is Paramatma, loss is also equally Paramatma, friend is Paramatma, enemy is also equally Paramatma, birth is Paramatma, death is also equally Paramatma, because birth and death it's only a concept, and health is a Paramatma, disease is also Paramatma, because everything he is doing. So when everything is doing, what has happened is again everything is Paramatma, that is the truth, which includes us also. And with this background, now Vasishtha Rishi is starting the first shloka. And what that shloka says, we'll see in Sanskrit, followed by English, and if required, Hindi. Vasishtha uvacha samastam khaluvidam brahma sarvatmetam atmatam aham anyatidam chanyat iti भ्रांति तजानघ। मैं ये जगत से अलग हूँ, ये भ्रांति छोड़ दो। अहम अन्य दिदम चान्यत, मैं इससे अलग हूँ। इति भ्रांति तज अनघ, अनघ मीन्स राम, अनघ मीन्स which cannot be destroyed. So Ram Anagha, he is given a very good title to that Ram, to us also, Anagh.
So he says, what is that? He says, sinless one, O Rama. You are a sinless one. All this is indeed Brahman or a supreme spirit. Again and again we are saying from so many chapters, so many times we are saying, but many people take it very lightly. लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, अरे काम डिविनिटी है. Like we keep on speaking about Sai Baba's experience. He has been told by one of his bhakta, अरे Sai Baba, you are saying that you are God. आप अपने आप को भगवान बोलते हैं. Are you really भगवान? He says, I am भगवान. Yes, I can say you also भगवान. He said, अरे नहीं नहीं मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ. So okay, I'll say I want to. You don't want that, so that is there. But remember that you are divine. Maybe today that is not your कन्विक्शन. आज आपका कन्विक्शन हुआ बिकॉज आपने आपका पास्ट लाइफ पकड़ के बैठे. यू आर होल्डिंग योर पास्ट लाइफ वेरी स्ट्रांगली. अपने अपना माइंड पास्ट लाइफ में पकड़ के रखा है. 1994 में मैं ऐसा था, इतने बुराइयां की. 2000 में इतनी बुराइयां की, 2005 में इतनी की, 10 में इतनी की, 20 में इतनी की, और 23 में कम है पर है. So you are holding all the past. Drop that past and keep your heart on your loving heart. Hand on your loving heart. You say, delete, delete, delete. Everything earlier is deleted. So what happens is, what is remaining is divinity, divinity, divinity. That's all. So it's so simple to delete. It is like a computer. You just control alter C. Everything is deleted. So that's so simple. Give a command, everything is deleted. No past. So you are divine. So there is no difference between you and avatars of this world. So you should know that this is a today's conviction, which will come to tomorrow's realization. Very nicely has been said by one of the monks or saints. It is the today's conviction which will be the tomorrow's realization. Bhagavan Ramakrishna Paramahansa used to say very nicely. He used to say कि अरे मैं मुक्त 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 ऐसे बोलते रहो तो तुम जरूर मुक्त हो जाओगे. तुम मैं बद्ध 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 बोलते रहते हो इसलिए परेशान होते रहते हो. डोंट डू दैट. Say always that I am divine, I am divine, I am divine. Yes, you are divine. I am liberated, I am liberated, I am liberated. Yes, you are liberated. Whatever you say, you are that and you will become that. We have already seen one of the stories which we are going to see subsequently, Indupakhyana, wherein we have seen that Hindus has created 10 Brahmandas just by saying that, yes, I am Brahma, I am Brahma, I am Brahma. So 10 Brahmandas were created. Such a power is there, power of thought. So same here it has been told. All this which is spread is a self. ये जगत में जो कुछ दिख रहा है वो ओनली सेल्फ है, नथिंग मोर देन दैट. गिव अप द कंफ्यूजन. वो बोल रहे हैं वशिष्ठ ऋषि. किसको बता रहे हैं? राम को बता रहे हैं, और राम के थ्रू अपने को भी बता रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? गिव अप द कंफ्यूजन. कंफ्यूजन तुम्हारा जो जगत में है, क्या कंफ्यूजन है? आई एम अनदर, दिस इज डिफरेंट. मैं एक अलग हूँ और इस जगत में दूसरे लोग हैं. मैं अलग हूँ, भगवान अलग है. मैं अलग हूँ, जगत अलग है. मैं अलग हूँ, मेरी पत्नी अलग है. मैं अलग हूँ, ये घर अलग है. एक्चुअली सब डिवाइन है, अपन उसका वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे. जो स्पीकर है वही लिसनर है. तो बोलने की क्या जरूरत है? इसलिए बोलने की जरूरत है क्योंकि पता नहीं है. ये पता रहता है जो सब सिद्ध पुरुष रहते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं. और अभी आ ही रहा है, अपना टॉपिक का नाम ही है सिद्ध गीता श्रवणम, द हियरिंग ऑफ सॉन्ग ऑफ द सेजेस. ये अभी वशिष्ठ ऋषि अपना राम को जो बता रहे हैं कि भाई जनक ने क्या सुना वही चीज बताने वाले हैं. और वो सुनने इसमें सिद्ध गीता क्या है वो भी बताने वाले. स्टोरी जनक की इतनी सुंदर है. द स्टोरी ऑफ जनक इज सो एन्चेंटिंग that will really enjoy that story and will be very happy and blissful to listen that story. So it is a divine grace that satsang comes in life. ये बहुत ही ईश्वर की बहुत ही अनुकंपा है कि अपन लोग एसेंस ऑफ योग वशिष्ठ पढ़ पा रहे हैं. नहीं तो ऐसी बुद्धि होती नहीं. दोपहर के 2:45 हुए, बहुत सुंदर नैप लेने का टाइम है, मस्त सोना चाहिए, कोई सत्संग नहीं करना चाहिए, कोई योग वशिष्ठ नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं. आराम करो. Become tamasic and die one day, again become some animal, die one day, and again become some plant, die one day, again become some human being, die one day. Keep on happening this Janma Mrityu Vera will keep on doing unless one fine life, your divine grace of this God will come. So this is that fine life. So it is a divine grace, satsang comes in somebody's life, and happiness is an expression of bliss that we are. So happiness is an expression of bliss that we are. अपन जो लोग खुश है वही एक्सप्रेशन वो ब्लिस का है. तो वही हम बता रहे हैं. ड्रॉप योर कंफ्यूजन. आई एम अनदर, दिस इज अनदर. ये तुमको कंफ्यूजन ड्रॉप करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाई? बाय गॉड्स ग्रेस लेट मी हैव सत्संग एवरी डे. This is our prayer. By God's grace, every day there should be satsang. There should not be any disturbance for this satsang.
कोई जीवन में बाधाएं भी आएगी तो भी सत्संग अपने को हटाना नहीं है। कहीं कहीं गए या किए तो व्हाट विल हैपन, लेट्स से आई एम नॉट देयर फॉर फ्यू डेज, आई एम ऑन अ टूर समवेयर, आई गो, so that time you can revise again because we have already put up the procedure. What is the procedure? We keep on revising the topics from chapter number 1 to chapter number 10, chapter number 15. Now we are already in chapter number 11. So we can do that revision. Mind well, I'll also be doing the revision. मैं भी वो रिवीजन करूंगा if sometime I am not the speaker available. So we can, fortunately YouTube has given such a good facility to us. We can again revise because most of the chapters are telling only one thing, that is the divinity, and by that our mind will remain subtler. So by God's grace, let us have a satsang or afternoon meeting or whatever the name you want to go every day for the seeker of truth. जो ये सच्चाई जानना चाहता है उसके लिए, जो नहीं जानना चाहता है वो मौज में रहे। मौज में रहने के साथ, मौज में रहने ये बर्थ और डेथ के चक्कर में घूमते रहे, या मिजरी और हैप्पीनेस के, जॉय और सौरव के चक्कर में घूमते रहे, बिकॉज उसको ये पता ही नहीं रहता है ये कुछ देने वाला सब परमात्मा है। एक छोटी सी चीज, लौकिक चीज आप परमात्मा को मांगो, कितना इजीली वो दे देता है। देखिए अगर तुम्हारा मन बहुत शांत होगा और स्थिर होगा और प्रसन्न चित्त होगा तो तुरंत दे देता। क्यों देता? क्योंकि एवरीथिंग इज परमात्मा, वो खुद सुनता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल है, वो तो ऐसे होना ही चाहिए। नहीं हुआ तो अपने में इंट्रोस्पेक्शन करके चेक करना कि कोई ना कोई अपने में कमी है। So that kami had to go only that is possible only by a satsang if you do. So you should have a discrimination, and this discrimination is only your guru. What is the discrimination? Relative jagat और absolute jagat में का discrimination करना पड़ेगा। And how to do that? Learn from your own experiences. अपने experiences अपने को learn करना पड़ेगा। What are our experiences? डिस्टर्ब माइंड इज मिजरी। अपना माइंड जब डिस्टर्ब रहता है, ईश्वर अपने को ऐसी मौका देता है माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत सारी थॉट्स आती है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ईगो बढ़ जाता है। माइंड डिस्टर्ब इज ए मिजरी, अनडिस्टर्ब माइंड इज हैप्पीनेस। जैसे ही माइंड अनडिस्टर्ब हो गया वैसे हैप्पीनेस। somebody says yes, I have achieved this, so naturally you feel some happiness for momentarily, but after some time you feel अरे I have to achieve some more, so mind is disturbed. So the disturbed mind is misery. Moment the ego comes, moment the desire comes, moment the sankalpa comes, these three things comes, disturbance starts. Moment I say life is time pass, कुछ भी नहीं करना है मुझे, I have to do nothing, nothing I have to do because divinity is sitting in my heart. What will happen? Your mind will immediately become tranquil. So you want tranquility or you want disturbance in life? You have to decide. If you want to have disturbances, keep running post to pillars. इधर से उधर भागना चालू रखो, तो disturbance will keep on coming. So disturbed mind is a misery, undisturbed mind is an happiness. Disturbed consciousness is mind. जो अपना कॉन्शियसनेस है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो माइंड है, उसी को माइंड बोलते हैं। क्या? वो माइंड कॉज एंड इफेक्ट में घूमते रहता है। कॉज ये हुआ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कॉज एंड इफेक्ट। एंड अनडिस्टर्ब माइंड इज अ कॉन्शियसनेस। जब माइंड अपना शांत है, अपन कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, आंखें बंद नहीं है, शांत बैठे हैं, सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अपने पे उसका कोई भी परिणाम नहीं हो रहा है। अच्छा भी परिणाम नहीं हो रहा है, बुरा भी परिणाम नहीं हो रहा है। ये दो लोगों को हो सकता है, एक तो पागल है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, और दूसरा वो सिद्ध पुरुष है कि उसके दिमाग में सब जा रहा है पर वो सब ईश्वर का मैसेज करके ले रहा है, इज नॉट कमेंटिंग। देखो सुनो बोलो मत, so then you are with the divinity. See, hear and don't talk, you are with the divinity, because you know what is the purpose of life. Life purpose is only mind and mind, mind to mind. So when you mind your mind, what will happen? You will be tranquil, you will be blissful, you will be cheerful, you will be happy, you will be contented and over and above relaxed and cool. That is what we are saying so many times, so many days, and so many times in a day. अपने को करना क्या है? यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, कुछ अपने को अचीव नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अपन सिद्ध है। सिर्फ उसको पता कर लेना है। पता करना है यानी क्या? अंडरस्टैंडिंग। यू हैव टू ब्रिंग समझदारी, जीवन में समझदारी लेना है। तो चलिए और एक श्लोक लेते हैं और उसके बाद देन विल switch it over tomorrow what is the Siddha Gita, but let's see second shloka, that is तत ब्रह्म गणे नित्ये संभवन्ति न कल्पना यथा प्राप्त अनुभवात् सर्वत्राभिवांछनात् त्यागादान परित्यागात् विजरो भव राघव। In the eternal and deep Brahman, that is the supreme spirit which is spread, thoughts or imagination do not arise. See, same thing what I was saying up till now.
अगर आप वो सुप्रीम स्पिरिट के साथ एक हो, या वो भगवान के साथ एक हो, या ब्राह्मण के साथ एक हो, एकीभूत हो गए, तो थॉट्स डू नॉट अराइज। आपके माइंड में थॉट्स आ ही नहीं सकती, बिकॉज सेंस ऑफ अदरनेस इज जीरो, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज जीरो। आपको ये बाहर में सेंस ऑफ अदरनेस भी नहीं है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस भी नहीं है। अभी सेंस ऑफ अदरनेस यानी कैसी, ये मेरे हाथ है, नीचे में पैर है, हाथ और पैर अलग अलग है, बट देन सेंस ऑफ अदरनेस इज नॉट देयर बिकॉज दे बिलोंग टू मी। मुझे पता है हाथ और पैर अलग अलग, हाथ यानी पैर नहीं, पैर यानी हाथ नहीं, बट दे बिलोंग टू द बॉडी कॉल्ड एज सत्येंद्र। So then I am very happy. Similarly, the whole world you are seeing, some male, some female, some animals, some donkey, some monkey, some plants, some rivers, some this thing, but they are all the part of that same divinity body. When you know that divinity body you are, so be happy. कोई दुख वाली बात ही नहीं है। अच्छे भी आप ही हो, बुरे भी आप ही हो, तो अपने क्या कर रहे हैं, बार बार वही आ जाता है, अपने मन को अच्छा रखना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसी बड़ा सुंदर एक मन है। कटौती में गंगा है ना, उसके टोकरी में गंगा। अगर मन अच्छा है तो टोकरी में जो कोई पानी है वो चमार के जिससे वो जूते साफ कर रहा है, वो गंगा का पानी है कह रहा है, वो गंगा अमृत है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसकी जो वो पॉलिश करने की जो कटोरी कटोरी है, उसमें जो पानी मैला है, वो बोलता है ये मैला पानी है ही नहीं, ये गंगा का पानी है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इतनी सुंदर फ्रेज बताई है। सो व्हाट हैज टू बी डन इन द इटर्नल एंड डीप ब्राह्मण, यू हैव टू बी इटर्नल एंड डीप, दैट आपका कॉन्सेप्ट इतना पक्का हो जाना चाहिए, which is spread supreme spirit, the thoughts or imagination do not arise। यानी उसमें कोई विचार नहीं आएंगे और सोच भी नहीं आएगी। है ना, क्या बहुत ही सिंपल। Drop your past, drop your future. Don't think about the past, don't worry about the future, don't have any comparison in present. Then you are divine। कोई भी पुरानी चीजें सोचो मत, आगे के बारे में चिंता करो मत, और अभी कोई जगत के लोगों के साथ कंपैरिजन मत करो, तो आप डिवाइन हो, आप प्रत्यक्ष परमात्मा हो। सब लोगों को प्रणाम। तो यही करना है रामा, बाय एक्सपीरियंस सुटेबल टू द सर्कमस्टेंसेस। फिर अभी कैसा जगत में रहना है बताते। बाय रामा, बाय एक्सपीरियंस सुटेबल टू द सर्कमस्टेंसेस, बाय द absence of wish or desire everywhere at all times, and by the renunciation of both taking and living, that is receiving and resigning, become free from fever and एंजाइटी से फ्री हो जा। फिर दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रामा मीन्स हु, अपन साधक लोगों को बोल रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि। हे साधका, लिसन, व्हाट हैज टू बी लिसन, बाय एक्सपीरियंस सुटेबल टू सर्कमस्टेंसेस। अपने एक्सपीरियंस क्या है, somebody is a physician here, somebody is a housewife here, somebody is a administrator here, somebody is a businessman here, somebody is a broker, software engineer, so many experiences we have, we have, so behave according to that। कैसे बिहेव करना है, बाय द absence of wish, कोई भी विश रखो मत, बाय absence of desire, कोई भी डिजायर मत रखो, एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, सब में कोई, सब डिजायरलेस हो जाओ, क्योंकि सब अपन ही तो है, कहाँ डिजायर करेंगे। बाय द रिनाउंसिएशन ऑफ बोथ, रिनाउंसिएशन, अरे फिर कोई लोग सोचेंगे ऐसा है क्या तो मैं सब छोड़ देता, नो नो नो, दैट इज नॉट अलाउड। बाय रिनाउंसिएशन ऑफ बोथ, टेकिंग एंड लिविंग, मैं कुछ लूंगा या कुछ छोड़ूंगा, लेना भी नहीं देना भी, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। मेक ऑल एफर्ट्स, इफ यू आर सक्सेसफुल, हरि कृपा, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, हरि इच्छा। कीप योर माइंड ट्रैंक्विल, एंड बाय द रिनाउंसिएशन ऑफ बोथ, टेकिंग एंड लिविंग यानी रिसीविंग एंड रिजाइनिंग, लेना और छोड़ना दोनों भी, बिकम फ्री फ्रॉम द एंजाइटी। जो जीवन में तुम्हारी एंजाइटी आ रही है, उसको फीवर बोला है वशिष्ठ ऋषि ने। तो ध्यान त्याग परित्यागत विजरो भव राघव, जो ज्वर आ रहा है उसका विजर, उसको फीवर जो आ रहा है उसके फ्री फ्रॉम फीवर इज विजर, वो विजर तुझे छोड़ना है, एंजाइटी छोड़ देना है। सो व्हाट हैज टू बी डन इन दैट केस, very nice example or a exercise is given to us now Vashishtha Rishi after completing 10 chapter. What he says, my dear sadhakas, whatever now you are understood or learned, it is going to skip, ये आपके माइंड में से तुरंत स्किप हो जाने वाला है। सो टेक योर पेन एंड डायरी आउट, अपना डायरी और पेन बाहर निकालिए, और क्या बोलते हैं, व्हाट आई हैव लर्न टुडे लिखिए। So please write down what I learned today. I am not another. I learned this. I am that supreme spirit. I learned this. I am not bothered about any my wish or desire. Everywhere I am seeing the divinity. I am even given up taking or leaving, यानी मेरे को जो मिल रहा है हरी इच्छा और हरी कृपा से मिल रहा है। I am not bothered and I have no anxiety. I am relaxed.
Moment you are relaxed, you will be tranquil, you will be blissful, you will be contented, you will be peaceful, you will be blissful and over and above relaxed and cool. तुम्हारा जीवन ही सुधर जाएगा. That's why he says, he advises us to keep some diary, take down some notes, take down some points so that it will help us in our life. That's what has been said. So let us take one more shloka and stop here. Yet, yes, third shloka number third. Yes, yedam janma pashyatam vidya hi vimala tata आर्यता हृदया मैत्री सौम्यता मुक्तता धृता समाश्रयन्ति ते नित्यं सर्वं वाञ्छति तं जना. So what is this? To whom this birth is last? Listen now very carefully. ये अपना आखिरी बर्थ है. अपना जन्म मृत्यु के फेरे में से अपन निकल जाने वाले. अगर अपन इसको प्रॉपरली कॉन्टेम्पलेट करेंगे. यसेदम जन्म पश्चातम विद्या ही विमला तथा. To whom this birth is a last birth, final, whose knowledge is endless, stainless, जिसका नॉलेज एकदम प्योर है. नॉलेज तो जगत में बहुत कुछ है. लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फैमिली में अच्छे से रहना चाहिए, समाज के लोगों को मदद करना चाहिए, एनजीओ खोलना चाहिए, आश्रम खोलना चाहिए, प्रोपोगेट करना चाहिए भगवान का नाम, कृष्ण का नाम करो, अल्लाह का नाम करो, अपने गुरु का नाम करो. ये बहुत सारे थॉट प्रोसेस है. पर यहाँ वो सब बताए नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं. यहाँ बोले अपना माइंड प्योर करो, इंडिड प्योर एंड सो आर ही इज नोबेल. तो इसका ऐसा जो आदमी करता है जिसका ये लास्ट बर्थ है, तो उसका क्या रहता है बिहेवियर? So is his nobility, cordiality, friendliness, gentleness, freedom, wisdom. And अगर ऐसा आदमी अपने को मिल जाता है जीवन में तो कैसा रहेगा? Him all his people will like and he will also like all the people. कोई उसको भला बुरा भी दिखेगा तो भी वो उसको लाइक करेगा, कोई उसको भला बुरा बोलेगा तो भी लाइक करेगा. सब लोग. इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई भला बुरा नहीं बोलेगा. जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के ऊपर थूकने वाले भी लोग निकले, भगवान बुद्ध को गालियां देने वाले भी लोग निकले, बट भगवान बुद्ध has taken it very sportively and then those people got converted. So you cannot gel nicely with all the people all the time, even though you are siddha, because siddha is siddha, all other people are asiddha. बाकी लोग असिद्ध है तो वो लोग तो उनके लेवल से ही चलेंगे. तो somebody is spitting on भगवान बुद्ध, somebody is shouting at भगवान बुद्ध, but subsequently भगवान बुद्ध has, because of their sanidhya and because of grace, they got changed. There are some occasion like Hridaynath was staying with Bhagwan Ramakrishna Paramahansa. Bhagwan Ramakrishna Paramahansa was Bhagwan Ramakrishna Paramahansa, but he could not be corrected. Bhagwan Ramakrishna Paramahansa told him so many times. Hriday used to say, Rudu, Rudu, listen, you only keep on listening me, you तेरा सब हो जाएगा, you will be divine. उसने सुना ही नहीं. He said, Mama, he always used to say, Mama, कुछ दिमाग में नहीं जाता. What you are doing, I don't understand. I am not for it. And then finally, he took some animals from Dakshineshwar and went to his village and started plowing the fields. अब उसका वो प्रारब्ध होगा प्लो fields करने का. So what has been said, we अपना प्रारब्ध बहुत बढ़िया है, because we are listening to essence of Yogavaasishtha, contemplating on that, trying to make our mind peaceful, cheerful, blissful by the God's grace, and God always helps for that. So in the absolute consciousness, solid reality, there are no thoughts, no imagination. इसमें कोई thoughts और कोई imagination नहीं रहती. And only purpose of life is let divinity express through us. अपने जीवन का पर्पस एक ही है, डिविनिटी अपने जीवन से आना चाहिए. And that divinity expressed through us only by happiness. That divinity expressed only by happiness. So our always alertness, consciousness should be towards that. Am I happy? Am I seeing this world as a real? अगर मैं जगत रियल देख रहा हूँगा तो मैं फंसूंगा, because this world is not, it's a long round dream. ये तो ड्रीम है, इसको कहे के लिए सच मानने का, सच मानेंगे तो फंसेंगे. तो अपने को क्या करना है? थॉट जीरो करना है, आई एम नोबडी करना है. मोमेंट यू से आई एम nobody, so you'll be happy, because nobody is only happy. Somebody, if you are becoming somebody as a husband, you are becoming somebody as a wife, you are becoming somebody as a son, you are becoming somebody as a grandson, if you are becoming somebody as a doctor, if you are becoming somebody as an engineer, if you are becoming somebody as a politician, you will suffer. Obviously, because you are taking upadhis. But if you say, no, I am that, even if you say that Jiva, I am the part of that divinity, part bhi bol diya to you will be always happy. Or if you say above that, I am only the divinity manifesting, and that's what is said here. Only purpose of our life is let divinity express through us, and divinity expresses through us only as happiness. If you talk about any flower, let's say rose flower, how the divinity is expressing that through rose flower, the fragrance of rose is giving that
डिविनिटी टू द रोज फ्लावर। वो फ्रेगनेंस कितना अच्छा आता है। वो बहुत डीप जंगल में भी रोज फ्लावर का बहुत बड़ा प्लांटेशन होगा, तो वो स्मेल बहुत दूर तक जाएगा, एंड द पीपल विल गो रनिंग टुवर्ड्स दैट flowers to take that smell. Oh, what a nice smell it is. Similarly, the divinity. So the people will come running to you like the people who are like-minded, not repelling people. We already seen four types of people, so we'll not comment about the four type of people. The people who are troubleshooters, with them you have to be indifferent. The people who are younger to you, you should be friendly. People who are above your age, you should have respect and reverence. Likewise, we are seeing the all the four this thing. So people who are troubleshooter, be away. But people who have the vivek, who have the discrimination, be with them. So love as a Paramatma. Love everybody as a Paramatma. And love is not a thought, then it will be Shiva Bhave Jiva Seva. Bhagavan Ramakrishna Paramahansa says, coin this term. If you really want to help someone, you are not doing a great favor to anyone. It is a Shiva Bhave Jiva Seva. You are seeing Shiva, that Paramatma only you are seeing everywhere. But if you love as a pity, are re, we have to help him, he is a poor person. So I have to give 10 rupees note to him. You are giving, then what is happening? Then वो that true 10 rupees और वो poor आदमी तो भूल जाओ. It is unfortunate that you are maintaining the duality in the world. तुम अलग हो तो वो अलग है, ये तुम समझ रहे हो और तुम फंस रहे हो. So no feeling of pity or angry at any time on anybody. किसी से गुस्सा करने की जरूरत नहीं, किसी पे pity होने की जरूरत नहीं. You have to see only really if you want to help. Nobody stops you. So don't get excited in the life, don't get dejected in the life, because this is called as a fever. By Vasishtha Rishi told to Rama and through Rama told to us. And what we are seeing in the world is only duality. Otherwise, everything is permeated by that Paramatma. That means, other than Paramatma, there is nothing in this world. In this absolute conscious, solid reality, there are no thoughts, there are no imagination. So, this is our sadhana. So, with this, tomorrow we'll be starting that what is this Siddha Gita and how this Siddha Gita came in the life of Vasishtha Janak life, been told by Vasishtha Rishi, that is going to be started by this fourth sloka, which we'll be seeing tomorrow. So today's takeaway is what? Everything is Paramatma. That is the truth which includes us also. With this prayers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramachandra Pranamastu, submitting the divine fruits to the holy feet of Sri Ramachandra. Today is the birthday of our Honorable Prime Minister. I am wearing the T-shirt. I had also been to the morning some a very nice session where we have seen that run run skill for PM run skill was arranged, and there we participated. For what? Participated as been told by Vasishtha Rishi here, for having a bliss, for having a tranquility, and whatever has come in front of us, enjoy that. Enjoy with the divinity spirit and be relaxed and cool. With this, thanks for listening.